Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 12, keeping ourselves clean, and today is its third lecture. So my dear students, हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे हम जर्म्स से और डिजीजेस से बच सकते हैं, और अनहेल्दी हैबिट्स को अगर हम छोड़ दें तो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं होंगे और हम बीमार नहीं होंगे. So my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. So quickly answer, can you name some unhealthy habits? Very good. So my dear students, now is the time for an activity. So for this activity, this is given on page number 98 of your books, unit number 12. आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगी. ऑल यू नीड इज सम टेल्कम पाउडर, और मेरे पास यहाँ टेल्कम पाउडर है. Here on the paper I have spread some talcum powder, and what I will do is I will take my hand and I will put it in the talcum powder, और इस तरीके से you can see talcum powder मेरे hands पे लग गया. Now I will place it here and see that talcum powder is here on my one hand. The other hand is clean, but when I will shake hand with the other hand, जैसे मैं अपना हाथ मिला रही हूँ, because there is nobody else here जिससे मैं हाथ मिला सकूँ, so you can see that talcum powder is now on my other hand. Similarly, जब आप germs अगर किसी एक के हाथ पे होते हैं and that person goes around and touch things and shake hands with others, so होता क्या है कि इस तरह से germs जो हैं वो spread करते हैं. So if one is having germs, he can spread it to others also. ठीक है, तो जिस तरह से टेल्कम पाउडर एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, इसी तरह जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं. सो व्हेन यू डू नॉट वॉश योर हैंड्स, यू डू नॉट टेक बाथ, एंड यू डू नॉट वॉश योर हैंड्स व्हेन यू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, सो द टॉयलेट इज फुल ऑफ जर्म्स, तो आप वहां से जर्म्स कैरी करके इसमें साथ लेकर आते हैं एंड यू स्प्रेड इट एवरीवेयर जस्ट लाइक दिस टेल्कम पाउडर. सो द टीचर कैन ईजिली डू दिस एक्टिविटी. हाउ? आपको टेल्कम पाउडर चाहिए, spread it on the table and ask the students to just put their one hand in the talcum powder and then shake it with others, and this is how they can understand that how germs spread from one place to another and from one kid to another. और अगर किसी एक के अंदर unhealthy habits होंगी, so that person can spread germs to a lot of people. So this is the activity. Now my dear students, let's quickly move forward. The student learning outcome for today is that by the end of today's lecture, all the students will be able to identify the unhealthy habits that cause illness like cough and diarrhea, etc., and recognize the fact that germs can cause diseases and list the ways to avoid germs. So my dear students, हमने क्योंकि पहले unhealthy habits के बारे में in detail पढ़ लिया, और हम जो है वो story of अहमद भी पढ़ चुके हैं. But first, let's quickly have a look at the Islamic perspective. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, cleanliness is half the faith. सफाई निस्फ ईमान है. So my dear students, do you take care of cleanliness? क्या आप सफाई का ख्याल रखते हैं? रखना चाहिए आप सबको, थोड़ा बहुत नहीं, सबको बहुत ज़्यादा cleanliness का और सफाई का ख्याल रखना चाहिए. So my dear students, we studied about the story of Ahmed. हमने अहमद की स्टोरी पढ़ी जो बीमार हो गया था और उसको डायरिया हो गया था. They go to the doctor, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं एंड यू गेट सिक. और हमने तमाम अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में भी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, और हमने एक चार्ट भी बनाया था. हियर आई हैव द चार्ट ऑफ ऑल द अनहेल्दी हैबिट्स. यू विल ऑल्सो मेक इट एंड प्लीज पेस्ट इट इन योर क्लास सो दैट यू विल रिमेंबर कि कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें बीमार कर देती हैं. दीज आर ऑल द हैबिट्स. So my dear students, now we will move forward towards today's lecture. अब आपको कौन सा पेज खोलना है? Let's have a look. You will open page number 98 in your books. I hope everybody has opened page number 98. So हम अहमद की स्टोरी पढ़ रहे हैं. Let's continue it. The doctor further explains that when we eat with dirty hands, germs get attached to our food and enter into our body. When we eat with dirty hands, germs get attached to our food and enter into the body.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जर्म्स कैसे जो हैं वो इधर उधर स्प्रेड होते हैं, अभी हमने एक एक्टिविटी भी की जिस तरह टेल्कम पाउडर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर स्प्रेड हो रहा था, इसी तरीके से जर्म्स भी जो हैं वो अटैच हो जाते हैं हमारी बॉडी के साथ एंड दे एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू आवर माउथ, नोज एंड इफ यू हैव एनी कट और वूंड, उसके जरिए ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ओह सो हॉरिबल, ये तो बहुत खतरनाक बात है या बहुत डर की बात है ये। इज देयर एनी वे वी मे प्रिवेंट जर्म्स टू गेट इनटू आवर बॉडी, आस्क्स अहमद। अब अहमद पूछ रहा है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम जर्म्स को अपने अंदर दाखिल होने से रोकें? यस, श्योरली देयर आर मेनी वेज दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्थी. These are to maintain cleanliness. अब डॉक्टर ने उन्हें ये क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं और जिनसे हम क्लीनलीनेस को भी मेंटेन रख सकते हैं. The doctor shows them in other chart showing the ways how to maintain cleanliness. The chart is on the next page. मैं भी आपको शो करती हूँ. Wait a second here. Ahmed, Fahad and their parents say thanks to the doctor. Ahmed and Fahad decided to make aware their class fellows about these rules. They will make small posters and display in their classrooms. So my dear students, Ahmed और Fahad ने डॉक्टर से बहुत अच्छी बातें सीखी. उन्होंने उन्हें कुछ हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनका चार्ट दिखाया और उसके बाद अहमद और फहद ने फैसला किया कि वो जो हैं वो कुछ अवेयरनेस पोस्टर्स बताएंगे जिसके अंदर वो कुछ अनहेल्दी हैबिट्स दिखाएंगे और फिर कुछ हेल्दी हैबिट्स दिखाएंगे और सबको बताएंगे कि कैसे जो है वो बीमार हो सकते हैं और कैसे वो अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज द चार्ट दैट डॉक्टर शोड टू अहमद एंड फहद कि कैसे आप अपने आप को साफ रख सकते हैं. जस्ट लुक एट द पिक्चर्स. ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ, wearing clean clothes, throwing the trash in the dustbin, trimming and clipping your nails, and washing your hands before and after meals. This is how you can keep yourself clean. ये वो तमाम pictures हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि कैसे आप अपने आप को साफ रख सकते हैं. We will discuss about them in the next lecture in detail. So my dear students, now germs are most likely to be present in dirty environment. For example, dirty places where garbage is all around, dirty clothes, unhygienic, in half-cooked food. When we live in such places, germs get attached to our body, that is hands, food, and to the things we use. Conduct the above mentioned activity in the class to make students understand how do germs spread. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्ट में टेल्कम पाउडर वाली एक्टिविटी करवाई थी जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं. जब आप गंदा खाना खाते हैं, गंदी जगहों पे हाथ लगाते हैं, हैंड्स वॉश नहीं करते, तो जर्म्स जो है आपके हैंड्स के साथ या बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं. इफ़ यू वेयर वॉश्ड क्लोथ्स, गंदे कपड़े अगर आप पहने रखेंगे तो जर्म्स आपके ऊपर अटैच हो जाएंगे. And when you eat with such hands, drink with such hands, you shake hands with someone, तो ना सिर्फ आप अपने अंदर germs को बल्कि ट्रांसफर करते हैं, you also make other people affected with germs. So if you do not wash your hands, if you will eat with dirty hands, and if you eat unhygienic food from vendors and from outside, there is more chances to get sick. There are more chances to get sick. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you will open picture reading in your book, unit number 12. I hope everybody has opened this page. Read pictures carefully. Identify each action as healthy or unhealthy right in front of each picture on given space. So my dear students, here are some pictures which you need to look at carefully and then decide whether it is healthy habit or an unhealthy habit. Let's have a look. The first boy is playing in mud and of course there are so many germs there. So this is unhealthy. This is how you will write in front of each picture. So if you will not wear mask and smoke, you will get cough.
So this is also unhealthy. Washing hands with eating food with clean hands and having fruits and soups, that is healthy. And if you will not take bath daily, you will more likely to get head lice. So this is unhealthy. So my dear students, this is how you will complete your page. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards listening and speaking question. Listen to the question very carefully and then answer. How can we prevent ourselves from germs? By washing hands, by eating healthy food, by taking bath. That's how we can keep ourselves healthy. Now, is it correct step of Ahmed and Fahad to make others aware of importance of cleanliness? क्या अहमद और फहद का ये स्टेप या उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक था कि उनको दूसरों को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे जो है हम अपने आप को साफ रख के हेल्दी रह सकते हैं? Yes, spreading awareness is a very good habit. Okay, my dear students, now is the time to note down the homework. For homework, you will do home activity number 3. Maintain cleanliness at your house. Practice the following daily. ठीक है, आपने अपने घर को भी साफ रखना है और आपने डेली क्या करना है? Clean your bags and study area. Wear clean clothes. Comb your hair. Polish your shoes and wear clean socks. And help your mother in cleaning. आपने ये तमाम जो काम हैं ये आपने डेली बेसिस पे करने हैं. So that is how you can keep yourself and your surroundings clean. Now, my dear students, what have we learned today? We can avoid germs by observing cleanliness and avoiding unhealthy habits. हम सफाई करके और इसके अलावा unhealthy habits को छोड़ के हम अपने आप को साफ रख सकते हैं. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.